Hi everyone, I am here with a Lohri look. So पंजाबियों में लोहड़ी बहुत ग्रैंड तरीके से मनाई जाती है, especially if it's first Lohri after wedding, after marriage, or it's first Lohri of a newborn baby. So let's get started with this look. And I have clean face और मैं अपने बाल थोड़े से पीछे टक इन कर लेती हूँ ताकि वो फेस पे ना आए. So I'm using Color Bar's Perfect Selfie Oil Primer because सर्दियाँ होती हैं तो oil primer works best in this season. So I'm just applying it and blending it into my skin really nicely. And I'm color correcting. मैं use कर रही हूँ Miss Claire का corrector in orange and it is very like nice orange. I would say it's a peachy orange. और आप देख सकते हैं कैसे ये कैंसिल आउट कर रहा है डार्कनेस मेरी फेस की. सो मैं साइड्स ऑफ माउथ, अंडर आइज, लिड्स, इनर कॉर्नर्स ऑफ आई, जहाँ पे भी मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आई एम अप्लाइंग देयर एंड ब्लेंडिंग इट विद माई फिंगर्स ओनली really nicely. Now coming to foundation, I'm using PAC HD foundation in 3.0, a perfect match for my skin tone, and I'm just taking on back of my hand और एक ब्रश की मदद से मैं इसे अपने चेहरे पे लगा रही हूँ. And then by taking a stippling brush, I'm just blending this foundation really nicely into my skin. Now I am highlighting with Maybelline Instant Age Rewind Concealer in the shade Medium, and मैं अपने under eyes, bridge of nose, foreheads and sides of mouth पे लगा रही हूँ because I really want to highlight those areas of my face, and I'm blending it with a concealer blending brush and now I am setting it with PAC baking powder set. और मैं यूज़ कर रही हूँ ये white powder because I love using this powder. और मैं थोड़ा ज़्यादा लगा रही हूँ because I'm gonna do eyes later on, that's why I'm putting a little more powder. For brows I'm using Sugar 3-in-1 brow shaper in Jerry Brown और इसकी मदद से मैं अपने brows fill in कर रही हूँ and then I'm just gonna brush it with a spoolie. Now let's come to the eyes. So सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ एक purple shade, medium purple, because I'm matching my outfit basically. So this is like a medium purple shade और ये मेरा होगा transition color, gradient color, और एक fluffy blending brush की मदद से I'm just applying all over my crease area and blending it nicely. And then I'm taking Sugar Blend the Rule Squad in the shade Disturbia और इसमें से ये dark purple shade मैं use कर रही हूँ अपने outer corners में. It is almost looking black, but it is like really dark purple, and I'm just blending it to my crease and the transition color. And now I'm taking this really nice lavender purple color and I'm just applying it to my lid, center of my lids, और मैं अपनी fingers use कर रही हूँ because इस तरह के shimmery shades best results देते हैं अगर आप fingers use करते हैं. And I'm just blending it with the other eyeshadows. Fallout है, but don't worry, it will go away. Now for the inner corners I'm using this light gold shade and I'm just popping right into my tear ducts और मैं blend कर रही हूँ बाकी eyeshadows से with a small blending brush. So I'm just gonna brush away all the fallouts और ये जो हमने ज़्यादा पाउडर लगाया था, it will help in that. And I'm using Ellen Blue काजल because एक पंजाबी look काजल के बिना, you know, it's like incomplete. And I'm blending my lower lash line with a small blending brush with the same eyeshadows I applied on my eyelid. And again I'm gonna remove the fallouts, and अगर आपको fallout ज़्यादा है आप थोड़ा सा powder और लेके कर सकते हैं. Now the game changer. So this is a Miss Claire's eyelash glue in dark tone and I'm using this glue as an eyeliner. It will change your lash game, trust me, because आपको eyeliner नहीं लगाना पड़ेगा, आप directly ये use करें. It is so easy to use. You can just pop your lashes after applying liner, and I'm using lashes M73 by PAC. And I'm just blending both the lashes, my original and the fake one, with Wet n Wild Mega Length Mascara, also applying to my lower lash line. Now coming to face again, I'm just gonna blend everything with a powder brush. जो भी fallout है वो भी मैं हटाऊंगी. And now I'm applying blush और मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ MAC blush in Prism, one of my favorite blush. आपने देखा होगा मैं बहुत यूज़ करती हूँ बिकॉज इट्स माई फेवरेट.
और मैं इससे कॉन्टोर भी कर रही हूँ एंड इट विल गिव मी दैट चिजल्ड लुक एज वेल, और थोड़ी सी ब्लश लुक भी देगा. एंड आई एम यूजिंग सेम ब्लश फॉर माई जॉज एज वेल, और मैं सेम ब्लश से अपना नोज़ भी कॉन्टोर करूँगी बिकॉज इट्स लाइक अ परफेक्ट कलर जो कि ब्लश लुक भी देता है एंड कॉन्टोर भी आप कर सकते हैं. For the highlighter, I'm using Colourpop highlighter in Wisp. Again, one of my favorite highlighter. Just applying to the highest points of my cheekbone, bridge of nose, and then I'm just gonna fix everything using Miss Claire Dewy setting spray because dewiness bhi chahiye and we need this makeup to last long. For the lips, I'm using Sugar's Matte Attack lipstick in Peachwood Mac muted pink lipstick, I would say, because eyes heavy hain, so that's why a little muted lips. And this is my whole look, so I'm just gonna go wear my jewelry and do my hair, and yeah, this is the final look because we Punjabi love heavy makeup, especially functions पे, और कई लोग लोहड़ी बहुत grand मनाते हैं. That's why I created this look and I hope you enjoyed this look, and I wish you a very 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 happy Lohri to everyone. I really hope you enjoyed this look and video. I will see you guys in my next video. Till then, stay beautiful, stay healthy, and please do subscribe my channel, and I'll see you in my next video. Bye bye. Mwah.